Pakistan intends to exploit the resources of Balochistan and keep the province backward, exiled nationalist leaders have said. They also claimed that Pakistani agencies are targeting their families to stop the Baloch uprising. Balochistan might be Pakistan's biggest and most mineral-rich province, but it has remained the poorest for decades now. The region, which was illegally annexed by Pakistan in 1948, has been roiled by a separatist insurgency ever since. Blaming Pakistan for depriving their homeland of basic health and education facilities, exiled nationalist leaders say it is a deliberate plan to keep the region backward. पाकिस्तान अपने लोगों को बलूचिस्तान में भेजेगा कि ये लोग इतने अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं और ये इतने हैं कि यहाँ पे काबिल नहीं है कि अपने मसाइल चला सकें। तो असल मसला उनका बलूच रिसोर्सेज पर नज़र रखना है, तो उन पर कब्ज़ा करना है। तो बाहरी दुनिया को और लोगों को ये साबित कराना है कि बलूच इतने काबिल नहीं हैं कि अपने सिस्टम चला सकें, और इसीलिए हम लोग बाहर से लाते हैं ताकि बलूचिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं उनको संभाल सकें। Baloch Republican Party's former General Secretary Azizullah Bukhti claimed that the oppression which his family has been facing in the hands of Pakistan is the result of his association with the Baloch Freedom Movement. While Azizullah Bukhti's father and elder brother were target killed few years back, his uncle Kolmir Bukhti and younger brother Imtiaz Bukhti still remain missing from the province. Azizullah Bukhti, who handles the Switzerland chapter of BRP, said Pakistan targets those who raise their voice against war crimes in Balochistan. हम जैसे लोग अभी जो उनके अप्रोच में, उनकी गिरफ्त में नहीं आ सकते, तो किसी ना किसी तरीके से वो हमारे रिलेटिव्स जो बैक कंट्री में हैं, बलूचिस्तान में हैं, जहाँ के भी हैं, तो उनके हाथ में आ जाते हैं। ये उनकी कोशिश है कि हम जैसे लोगों को सप्रेस करके हमारी जिद्दोजहद को रोका जाए। He also opposed Pakistan's ambitious economic corridor with China, which would be passing through Balochistan. Azizullah Bukhti said Pakistan's suppression will only increase in the homeland in the light of large-scale migration of Chinese who will come in the guise of development. बलूच पॉलिटिकल हवाले से जो भी है वो उस पर रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि बलूच कंसेंस के ख़िलाफ़ है। तो उस चीज़ को दबाने के लिए ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन जो भी होगा वो एक्सेलेट करेगा बलूचिस्तान में। तो उसमें हमें खदशा है कि जो बलोच नस्ल कुशी है उसमें एक बार फिर एक तेज़ी आएगी। Baloch have for years claimed that Pakistan government signed the $45.6 billion Pakistan-China economic corridor without informing the provincial administration. It has further handed down the control of the strategically important Gwadar region to a Chinese firm. Locals have also claimed that the federal government has launched a military operation in Balochistan to start work on the mega project.